का सत्संग। श्योर, हाँ जी जी हाँ, बिल्कुल। तो वो वाला बताती हूँ। जब जी रिसेंट का हाँ। अभी जो हुआ है, तो उसमें या, क्या है कि मेरी हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे। अब जैसे गुरु जी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, लाइफ ब्लेस करते हैं, उसके बाद हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा लाइफ ब्लेस करके फिर हेल्थ ब्लेस की। क्या हुआ कि मेरे को मेरा थोड़ा सा वेट गेन था, और साथ में मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और थायराइड भी था। अब है ना, और साथ में स्किन में बहुत जबरदस्त एलर्जी थी, ब्लैकनेस हो जाती थी। तो मैंने कई डॉक्टर्स को दिखा रखा था, कुछ डॉक्टर भी। और है ना, वो लोग बोलते थे आपको सही से एलर्जी है, कभी बोलते हैं कि पोलन से एलर्जी है, आप बाहर निकलना बंद कर दो, ये सब होता रहता था। और स्टेरॉइड क्रीम दे देते थे, थोड़ी देर के ठीक होता था और फिर से हो जाता था। अल्टीमेटली अभी कोविड शुरू होने से जस्ट पहले, और अस्थमा होता था मेरे को बीच बीच क्लीनिंग सीजन में, तो मैं अपना ही नेबुलाइज कर लेती थी, और बहुत ज्यादा मैं उस इन्वेस्टिगेशन में नहीं गई थी। और धीरे धीरे कंडीशन मेरी खराब होती गई। अच्छा, मैंने एलोपैथिक से के अलावा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब कुछ ट्राई कर लिया, पर ठीक ही नहीं होता था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2020 में जब कोविड शुरू हो गया था, मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और अप्रैल 2020 में क्या हुआ कि मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बात दो वाक्य तक बोलना मुश्किल हो रहा था, दो शब्द नहीं बोल पा रही थी, दो कदम नहीं चल पा रही थी, और है ना, बहुत परेशानी हो रही थी। तो नॉट गोइंग इन द डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन कराया, तो पता चला कि मेरा हार्ट की कंडीशन केवल 15% रह गई थी। एंड गुरु जी को मैंने बोला, गुरु जी, या तो आप मुझे ले जाओ या ठीक कर दो, आप देख लो क्या करना है। और उन्होंने ऐसी कंडीशन बनाई कि वो डायग्नोस हो सकी केस। और क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, घर वाले भी। और पर कोविड के कारण और कोई बाहर नहीं इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता था। पर उन्होंने ऐसी कंडीशन बना दी गुरु जी ने कि मेरा इन्वेस्टिगेट हुआ, और पता चला कि मेरा हार्ट सिंक हो रहा है पूरा पूरी तरह से। उसी कारण से लंग्स में पानी भर गया था, और मैं सांस नहीं ले पाती थी। तो अल्टीमेटली मेरे को उसी दिन 5 अप्रैल को मेरे को एडमिट किया गया, और फिर आईसीयू में। और 5 दिन में आईसीयू में रहे, कोई घर वाले कोई नहीं आते थे क्योंकि कोविड था। और आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मैं पहली दिन आईसीयू में भर्ती हुई, उस दिन मेरे को जैसे गुरुजी आए और मेरी आर्टरीज में कुल्हाड़ी मार मार के वो खुदाई कर रहे हैं जैसे। और और जब मैं उस दिन पहली बार, मैं बहुत आराम से सोई जैसे लाइक अ बेबी। गुरुजी ने मेरे को सुलाया, और जो नर्स भी थी, नर्स मेल नर्स था उधर, उसने इतने प्यार से मेरे को सुलाया कि मेरे को समझ में नहीं आई कि इतनी प्यारी नींद आ कैसे सकती है। और मैं जब से 2 साल से मैं सो नहीं पा रही थी बल्कि। और उधर पर आईसीयू में भी एक दो संगत नर्सेज जो थी बाद में मिली, जो ना गुरु जी की संगत थी। और आसपास मेरा बीपी हो गया था, 220 240 तक चला जाता था। धीरे धीरे वो सेटल होता गया, और बगल वाले केस के राइज होता था, और मेरा कम होता जाता था। एक पेशेंट का हार्ट हार्ट फेल हो गया, उसको रिवाइव किया। तो मैंने जैसे गुरुजी दिखा रहे थे, देखो तुम्हारे साथ ये सब होने वाला था, और मैंने इन सब चीजों से तुम्हें बचाया। और अल्टीमेटली जब 5वें दिन मेरा एंजियोग्राफी हुआ, तो उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं मिला, कोई रीजन नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को फिर डिस्चार्ज कर दिया, घर में आई। और फिर मुझे, चूंकि कोविड के डर के कारण, मुझे एक अलग से कमरा दिया गया, और मेरे लिए 24 आवर्स के लिए आया का इंतजाम कराया गया। नहीं तो कोविड टाइम में इतनी परेशानी हो रही थी मेड्स की कि कुछ मेड्स अरेंज नहीं हो पा रही थी, कोई आना जाना नहीं हो रहा था। पर मेरे फैमिली वालों को मेरे लिए अरेंज करना पड़ा। हेलो। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरी मैं बता रही थी आपको, जैसे स्किन की एलर्जीज वगैरह थी,
धीरे धीरे मेरी कंडीशन ठीक होने लगी। और साथ में मैंने अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सात्विक मूवमेंट एक शुरू किया। वो डाइट अपने पैटर्न चेंज किया, डिटॉक्स किया अपने बॉडी को। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा थायराइड ठीक हो गया, मेरा 22 kgs वेट रिड्यूस हो गया, और मेरे सारी स्किन की कंडीशन भी रिवर्स बैक होने लगी। मैंने गुरुजी क्या, किस रास्ते में आपको ले जाते हैं, आपको कैसे आपको समझाते हैं चीज को कि देखो तुम ये चीज गलत थी और तुम इसको ऐसे फॉलो करो। तो गुरुजी का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत अच्छा सत्संग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। इस सात्विक डाइट से भी आपको कितना फर्क पड़ा, इट्स वेरी गुड इंफॉर्मेशन टू एवरीवन। एंड नाउ डॉक्टर नीचा, आप अनम्यूट हो गए क्या? डॉक्टर यस, नीचा, जय गुरु या जी। जय गुरु जी, And यस यू कैन you hear? स्टार्ट। Yeah, जय या गुरु वी जी। कैन हियर यू, या डॉक्टर नीचा, योर सत्संग। Oh, Achal Paul uncle has joined, I think so. Yes. Yeah, uncle, बहुत बहुत आपका स्वागत है मल्टीलिंगुअल Zoom प्लेटफॉर्म पर। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल Zoom प्लेटफॉर्म पर, and we had been waiting for you, and it's a great pleasure, it's a big pleasure to welcome you on this platform. And आपका तो सत्संग हमने लाइट ऑफ डिविनिटी में भी पढ़ा है। इट इज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इमोशनल। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम बहुत बेताब हैं आपकी जर्नी गुरु जी के साथ सुनने के लिए। ओवर टू यू अंकल, यू प्लीज स्टार्ट। Uncle, we are not able to hear you. Would you please check? Jai Guruji, can you hear me now? Jai Guruji. Yeah, we can hear you now. Yeah, that's great, Uncle. Yeah, Jai Guruji. Okay. Thank you so much. Great. I have a humble request before I start. You sure? Open the windows, please, because I'm amazed how anybody who's even sharing satsang, leave alone those who are listening, are not even opening their windows. How can you do that? Uncle. Yeah, How sure, can Uncle. you do that? Yes. Okay. So I would request who can open their videos, they should open. First of all, I'll do. Uncle, I'm Geeta Paul here. Oh, yeah, that is. Wait a minute, let me just check up. You all have opened. I can't see you, Geeta, auntie. There you are. Yeah. That is Dr. Neeraj Arora. Yeah. Yeah. Hello. Jai Guruji. Jai Guruji, Uncle. Jai. Anyone else who's bold enough to show their face? Because I, for one, get a feeling of Chote Mandir, Guruji sitting on his asan and asking, "Chal Paul uncle, khada ho ja, apna satsang suna." So I can't start with dead windows in front of me. I don't get that feeling at all. Yeah. So my humble request to Pyari Sangat, Guruji Sangat, it will be more participative, and I don't believe in monologue. I love interacting with Sangat. Yes, My approach is entirely different, because I have to see Pyari Sangat, because Guruji always used to look around and then say a few things. Tenu samajh aaya, he would in between stop us and say certain things which would help us to become more participative. Of course, Uncle. Of course, yes. Yes, you're very right, Uncle. So I find five courageous aunties who have, and my
My salute to 5 of them, all 5 of them. Any more? गुरुजी की संगत तो बहुत ही प्यारी संगत है. There you are. There you are. Don't worry. Don't worry. Please open your windows. So kind, so nice. Yes, very encouraging. I have to get few more windows before I start, Gita aunty. I can't. Yes, uncle. Please, anyone who are not in There you kitchen are. and other place, yeah. No, how does it matter? Yeah. If you're walking, of course if you're not, walking, if you are Yeah. in the kitchen, if you are doing, because Guruji always used to say, अपने काम करया करो. जे ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ blessing ਮਿਲੇਗੀ. There is no problem. Our Guruji was very flexible, very understanding, very, he loved his sangat, and even now he loves his sangat. Of course, uncle. Yes. So any more? Waiting. Oh, one has left. They said we will not. Uncle, it's a big challenge now. No. They will. If they really love Guruji, they will open the windows. Yes. Yeah. Some more encouraging. There you are. Jai Guruji, everyone. Yes. Jai Guruji. What a wonderful. My iPad is blessed today to see so many Guruji's Pyari Sangat in one frame. Oh, wow. Jai Guruji, fine. I should not be greedy. But please understand, my only purpose is when I see Guruji's Sangat's face in front of me, I get connected that I'm in Chote Mandir, Guruji sitting here, and then I'm sharing. Trust me, nothing more than that. I don't want to earn any medal. I don't want anything. It is just that I have to get into that mode. Then whatever Guruji wants, I will share. Whatever Guruji wants. Otherwise, I can't. And I can't even imagine, satsang sharing with closed windows. It's like a dead wall in front of me. I just can't. Anyway, let me not stress too much on this point. You have the message is loud and clear. So I will start. How does it matter if you are driving? Good. Jai Guruji. Great. All right. Guruji का शुक्राना कि आज मेरे को फिर एक दफा मौका मिला कि अपनी प्यारी संगत, गुरुजी की प्यारी संगत के साथ रूबरू होने का और सत्संग शेयर करने का. Trust me, little while ago, my wife asked me which all you are going to share. I said, I don't know. I will start. Depends how many windows open, then I'll share accordingly. That was my answer, and then I came in this room. I said, I might even get delayed, so you go off to sleep if you want. So there we are. संगत जी, सबसे पहले शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी. एंड गुरुजी कहते थे हमेशा, मेरे दरबार विच उयो आ सकता है जिन्हों मैं चाहवां. Nobody can walk in just like that. Why? Because वो कहते तुहानू पता ही नहीं साडा किन्ने सालां दा जन्मा दा साडा साथ है. किसी अंकल को कहते थे तू मैनू जानने 100 साल पुराना साडा रिश्ता है. Can you imagine? You can't even dream of it. But that's what our Guruji is. Because he says, ये जो साथ आपको मैं अपने जोड़ूंगा, it is not because of this janam, it is 5 to 10 janams. उससे पहले का हमारा नाता है, तब ये जुड़ता है. और गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे, जब मेरे दरबार में आपको कनेक्शन हो जाए मेरे साथ, तो keep it direct. Nowadays there are so many messengers, so many multiple messengers floating around
on social media, in different cities, in different countries. It is scary. It is scary. They all claim that हम आपको गुरुजी से connect कराएंगे, bless करवाएंगे. Please don't get carried away. गुरुजी ने किसी को परमिशन नहीं दी, ना तो अपनी गद्दी पे बैठने की और ना ही ऐसे बोलने की. जो करेंगे गुरुजी खुद करेंगे और खुद किसी के थ्रू करवाएंगे. आप जब भी गुरुजी के दरबार में जाएं और वहां गुरबानी चल रही है, रिमेंबर वन थिंग, आपकी जो प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, आप वो लेके एंटर कर रहे हैं मंदिर, माथा टेक रहे हैं और आप वहां बैठे हैं. The moment you close your eyes and Gurbani is on, you will start getting answers to all your queries, all your questions. ये गुरुजी का खुद की वाणी है. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ. ਪਰ ਹਾਂ, कष्ट सारे इसलिए होंगे कि भाई डोंट आस्क कि कंप्लीटली एरेडिकेट. आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस. इस जन्म में आप आए हैं तो कुछ आपने अपने कर्म काट के फिर अगले जन्म की तैयारी करो. डोंट कैरी द बैगेज विद यू. अपने गुरु के पास आए हो, पूरा चीज मत बख्शवाओ, वो खुद करेंगे. व्हाई? बिकॉज ही सेज अपने कर्म यहाँ काटने. कहते मैं पहाड़ का राई बना दूंगा, मगर वो राई आपको यहाँ, यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड. अदरवाइज इट इज नॉट. गुरुजी मैंने वो कहते थे मैं कोई जादूगर हाँ, मैं कोई डॉक्टर है, तुसी आने हो मैंने ठीक कर दो. बीच बीच में वो ऐसे अपने कमेंट्स करते. व्हाई? बिकॉज ही वांटेड दैट वी ऑल are coming there. Obviously each one is going with some problem or the other. Don't expect instant results. Don't expect that. Because पहले step क्या है कि आप गए, you have bowed down in front of him, you have to surrender completely surrender yourself. Thereafter Guruji से direct connection करो. And once the connection is established, Guruji ने अपने आप आपके कष्ट दूर कर देने हैं. आपको मांगने की जरूरत नहीं. कहते थे गुरुजी, मंगन दी लोड़ नहीं मेरे दरबार, सिर्फ मन्नो. मन्नो means just believe in me. And how will you believe? Only when you will surrender, and surrender 100%. And how will you surrender? When you take off your shoes or chappals outside mandir, leave all your ifs and buts outside, entire logic outside. Because कहते हैं ना, इनफैक्ट डॉक्टर्स को बहुत टीज करते थे. कहते थोड़ी डॉक्टरी फेल हो गई, जितने थोड़ी डॉक्टरी फेल हुई उतो मेरा काम स्टार्ट होएगा. बिकॉज कोई चीज के लिए आप गुरु के दरबार में जा रहे हैं और आपने उनसे कुछ मन ही मन मांगा है, बिकॉज बोलने की तो जरूरत नहीं है, तो वो खुद ब खुद किस तरह ब्लेस कर रहे हैं आपको, वो हमें नहीं मालूम. आपको वो देख रहे हैं एक दृष्टि से, पहले in person, nowadays through his swarup. That is good enough. But believe me, Guruji listens. You have to just bow down and be sincere in your approach. Not what once he said to a young couple who were driving down the MG road, and they said, the husband and wife were fighting with each other. Wife was saying, let's go in. Husband was not agreeing. And I was sitting next to Guruji. And what happens after much tussle between the husband and the wife, before they entered Chote Mandir, Empire State, they said to each other, which Guruji told us later, no, chalo, let's try. And I had never seen Guruji getting so angry. As they entered Guruji's darbar and they were about to bow down, guess what Guruji says? Aa gaye ho? Let's try.
Mind you, what word they used was outside on the MG road. They had not even entered in, because they were still, negotiating or fighting with each other. Should we go in? Not. Should we go in or not? But Guruji got to know about it. क्योंकि वो तो जानी जान है, उनको सब मालूम है. So we should not be, testing our Guru. And that will come when we completely surrender. Because once we surrender, there is no question of any of any questioning, any reasoning. Okay, जो हो रहा है गुरुजी की knowledge में हो रहा है, and गुरुजी की कृपा से होगा. With that background, I will share with you one recent satsang. In June, in fact, we have been 8 months back, we have been blessed with our grandchild. So we were, after getting blessed from both Chote Mandir and Bade Mandir, we thought we will take her to Golden Temple, Amritsar. But only thing was, which we all were discussing, oh, it's so hot, 47 degree plus है अमृतसर में, how will we manage? दर्शन कैसे होंगे? इतनी गर्मी में बच्चे का क्या हाल होगा? My answer to my family was only thing, गुरुजी है ना, अपने आप करवाएंगे दर्शन. Okay. So, with that background, discussing time and again, should we go now? Should we go in August? No, rains ho jata hai, whatever. So we finally decided, okay, with Guruji's blessing, we will go ahead. So bookings are done, and we said we will not drive. It will be not comfortable with a child. We will take Shatabdi. That's most comfortable with a child. So we took Shatabdi. We reached there in the morning and check-in hotel. We said, okay, जरा धूप ढल जाए, शाम के वक्त जाएंगे गोल्डन टेम्पल. So तकरीबन 6-7 बजे we stepped out from the hotel, which was not very far off. We said, let's go. We reached there, and as expected, we all were shocked to see the long queue before entry. और आपको मालूम होगा, for those of you who have been there, कि गोल्डन टेम्पल में एंटर करने की राइट साइड में 2 लाइनें लगती हैं. And those line queue was so long that day, it went straight up to the Sarovar. Half of Sarovar was covered. That long. So we said, how will we do? They all were concerned. In fact, both my daughters, my grandchildren, they all were there. I said, don't worry. Guruji khud bakhud koi upay nahi karenge. So while we were discussing all this, I went up to the Sevadar who was standing at the exit, जहाँ प्रसाद मिलता है, और एकदम आप बाहर हो, वहाँ एक सदाजी सेवादार होते हैं, tall, he stands there. तो उनको मैंने हाथ जोड़ के विनती करी, मैंने कहा जी, छोटा बच्चा है, दर्शन ਲਈ कुछ अलाउ कर दोगे तुसी इत्थों? कहता नहीं जी, 3 साल पहला सब बंद हो गया है, कोई वीआईपी दर्शन नहीं. मैं कहा जी, बच्चा छोटा है, प्लीज. कहता नहीं जी, कुछ नहीं, इत्थे लाइन है, उत्थे खड़े हो जाओ. So while we were discussing, we were, in deep, I would say, concern, what do we do? उनकी करी हम तसिया आ गए, बच्चियां दे नाल आ गए. Now what do we do? I still said, don't worry. कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ Guruji has planned for us. He will not let us stand in this long queue and for darshan. Out of the blue, one Sardarji, wearing cream color salwar and shirt, long shirt, जैसे पंजाब में पहनते हैं, he comes up to us and talks to me in a language which I could not understand. He said, I realized he's deaf and dumb. So after 2-3 times he did like this, कि भाई आप छोटा बच्चा है, आपने दर्शन करने हैं. After, I said, हाँ जी, दर्शन करने हैं.
कहते come, ऐसे come तो नहीं मतलब he took me aside and he said stand here. So दो रो के बाजू में एक बैरिकेड लगा हुआ था, कोई नहीं खड़ा था वहां पे. No one was there. He said you stand here. So 7 of us, we stood there. 5 minutes हो गए, 6 minutes हो गए. No sign of any movement. My daughter said, Papa, if we stand in that long queue, at least that is moving. At least it is moving. But here we are stuck. Nothing is moving. I said, no. If he has come, I'm sure there is some way out. See, I will tell you, it was nothing else but total confidence which came because of 100% surrender. I said, no, there is some plan. So I kept standing there and I was persuading my family members not to move from here. We will stand here. After a few minutes, somebody came, God knows from where. He jumped inside. The queue on the right, he further pushed them on the extreme right. Then he came towards the barricade where we were standing, and by that time, 1 or 2 more persons also were standing. He pulled the barricade like this, और सानू इशारा करता है आगे चलो. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ खड़े हैं गोल्डन टेंपल ते ਅਸੀਂ कह रहे हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी. प्यारी संगत जी, you won't believe, when he asked us to go, we kept walking and walking and walking, not even a single person there, and we crossed more than half a Sarovar. The story doesn't end there. That same Sardarji, who helped us, who guided us to stand there, he comes back again. I had lost, in fact, I was not, finding him there. I said, I don't know where he has gone. He came back again. He held my hand like this. He said, come. मैं दूसरे हाथ से अपने बच्चे का, like, दूसरे grandchild का कहा और बाकियों का, please follow me. So the Sangat in front of him, he would just tap on their back and say, means छोटा बच्चा नाल है, उन्हों दर्शन करने हैं, तुसी साइड दे दो. Can you believe it? I'm still getting goosebumps while sharing this satsang. The space and the, people are moving on the right, and it is the path has been cleared for us. And 7 of us are moving ahead. Nobody objecting, nobody saying a word, and we are just following him. And we reach a point, final point, where that big danda is there, just before entrance, usko cover kara hota hai. That's where 2 sevadas are on the left and the right. That is where they allow limited sangat to take darshan, and then they again put it down. It's like a moving barricade like this. Over there we reached. Then I said again, Jai Guruji. But maybe he was not satisfied. He just looks at the sevadas. I don't know what he says because I couldn't understand anything anyway. And they open it. And they let 7 of us move ahead. अच्छा, हमारे आगे जो पहले वाली संगत थी क्लियर नहीं हुई तभी तक, तो अभी वहां थे. तो he says, sit down. A place where you're not even allowed to stand, that corner, he asked 7 of us to sit down and pray. Pyari Sangat ji, the story doesn't end here. By that time, all the Sangat ahead of us, in about 5 minutes or so, when we were all closing our eyes and praying, that gets cleared. The main barricade, that is not open, which means it has become 100% clear with not even a single Sangat there.
That's the time he comes and says, get up, go, do darshan. With not even a single soul in front of us or behind us, we 7 walk in. प्यार नाल मत्था टेकदे हैं, बच्चे नू ओ प्रसाद बाबा जी खुद देंदे हैं उत्थे, स्वरूपा भी देता उन्होंने खुद. How? We don't know. Don't ask how. Everything happened. And by the time he's again disappearing. And when we came out, we saw him standing in that corner. He said, he called me, he said, I said, Anji, like my I've got elder grandson also. So he said, take him up. ऊपर जहाँ गुम्बद है, ऊपर वो कहते ऊपर लेके जाओ इनको. So I said, okay. I asked everybody else to just stay put there because they said we are happy. We have इन्ने चंगे दर्शन है, असी नहीं किथे जाना. पर बच्चे नू 9 साल दा बच्चा मेरे नाल है, उन्हों मैं लेके ऊपर गया, ऊपर आराम ना पूरा राउंड कराया. अच्छा, he was waiting with other family members, and we came down. फिर आगे जाके सरोवर दा जल कहते ए लाओ शको, फिर आगे गए दर्शन किया, and we were out in less than 35 minutes or so. 40 is more, so I'm saying 35 minutes. In Golden Temple, in the peak, when the queue is so long, this happened. Sangaji, human being hai na, so greed is always there. So in his language, I'm trying to explain, of course, after doing Shukrana, I'm saying, next day, I want to do seva. Jadon Baba Ji di bheed upron leke aande hain thalle. Ekka, kal, I want to do this. I asked him in my, which he understood. He says, okay, means swere 4 baje aa jao. This is what I understood. I said, how will I meet you? Give me your phone number. Kehta, I don't keep phone. Kehta, I said, where will you be? Kehta, jo upar ek seedhi ja rahi hai, kehta ethe hona. He took us there. Kehta, ethe, like this is the place I'm going to meet you. Because then I said, what color cloth or what? He said, same. This is why my understanding, whatever I gathered. I said, okay. Now what? Asiji Swere being my birthday. So, Bacheta were totally satisfied. They said, Papa, we are not going. Sade darshan bahut change ho gaye. Thank you, Guruji. Shukrana, Guruji. Hum tusi jao. Toda birthday tusi jao. So, we were there with a purpose of being there in Golden Temple on my birthday. So, we reached there at 4. Now, the question was how to find him, where to find him, how to get seva of Babaji, how to do that. So I reached, both me and my wife reached there. Dikhya, charo taraf, upar chale gaye, idhar chale gaye. Now he's not visible. Concern. Where is he? How will I get seva? What will happen? I thought, आज जब मिलेगा ना तो थोड़ा जा इनाम भी दे देंगे. मतलब all that thing was happening because yesterday, the previous day, when all this happened, we were completely flabbergasted. There was no thought of, apart from saying just thank you, we never thought of giving anything. And then by the time थोड़ा senses आया, होटल पहुंचे कि ये दर्शन कैसे हो गए हमारे. सब गुरुजी की मेहर है, सब गुरुजी की मेहर. Anyway, so next day morning, we were looking around and we couldn't find him. So then my query became, and I went to the same Sevadar standing there. I said, ji, अच्छे एक सरदार जी है, cream color दा सलवार कमीज पाया से उन्होंने है, सेवादार है.
कहना जी ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਡਰੈਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। How at that point of time when he used these words, कोई गुरु दा प्यारा आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਗਿਆ, so it was none else. I am so sure it was Guruji who gave darshan, who came, helped, made sure कि उसकी संगत का दर्शन हो जाए without any problem, and he went away. Now 2 more days, well, total 3 days we were there. Morning, evening, we are there to find कि वो मिलेगा तो मैं तो उसके पैरों को हाथ लगाऊंगा, वो गुरुजी हैं और कोई नहीं है, किसी रूप में आए, मिलेंगे ही नहीं। सो अब इधर से खुशी भी कि गुरुजी ने हमारे को काम कराया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उधर से oh my God, how do I find him? How can I do शुक्राना in person? How can I touch his feet? How do I? But गुरुजी अपने उनके प्लान होते हैं। सो प्यारी संगत जी, मेरा मेन ये सत्संग सुनाने का है। I don't know how many of you are recently being associated. I will not use the word new sangat because there is no new sangat. There is no new sangat. All sangat is one. All sangat is one. Why? Because when we the Guruji ਤੁਸੀਂ स्वरूप ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। So there is no old, there is no new. All sangat is alike. So my humble request is, when you are in his charan, don't ask any questions. Just continue to do. Guruji himself will make way, clear the path, clear the roadblocks, and you will keep moving with, of course, his blessings. Of course, no one else. So that was one recent satsang which I thought I would share, because we still can't get over it. It has been more than 2 months. We still talk. Why did we not? We could have done this, we could have done that. All those things come across our mind, and शुक्राना ही करना आता है, और तो कुछ करने को है ही नहीं अभी। सो आपकी लाइफ में देखिए, हर एक की लाइफ में, वाई आपकी, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, और खुद ब खुद over a period of depending. Don't ever get impatient. Don't ever get, once you are in his charan, sooner or later they are bound to be taken care of. But for that, show patience. For that, keep doing shukrana. During COVID times, our prayers to Guruji was just this shukrana. You're keeping us alive. Because I used to dread touching my phone in the morning, WhatsApp. I used to tell my wife, oh my God, he's gone. He's gone. It was so scary to touch your phone during COVID times. And what we used to do, shukrana, uthte, baithte shukrana. So without shukrana, gati nahi hai. It is just not clearing the path for us. बाकी गुरुजी हमारे को एक चीज बताएं, एक रिग्रेट है लाइफ में। We were with Guruji, we were with in his charan, we were with his charan, I would say, because हमेशा अपने पास प्यार से बैठाना, बातें करनी,
कभी लकी हुए तो चरण सेवा भी देनी और बातें करनी. He never let us feel that he is God. He is Mahashiv. He is Antaryami. He never made us feel that. I would say those of you who have joined later are more lucky. Ask me why? Because you started believing that there is a God. And we, after having spent so many years with him, couldn't make out. हाँ, ये मालूम था अंतर्यामी है. हाँ जी बोलिए. But भगवान है ये तो हमें बहुत बाद में पता चला. इस चीज का बहुत बड़ा रिग्रेट है. बहुत रिग्रेट है. Because उन्होंने गल करनी वो यार इधर संगत वाले दिन इधर एक करके या लेके आ. So never let us feel disparity from here. भाई हम तो ऑर्डिनरी बंदे हैं बिल्कुल यहाँ नीचे. खुद वो महाशिव ऊपर. बट ऐसा कोई हर एक को इतने प्यार से बात करना, हर एक को ने उनके नाम से एड्रेस करना. मैं एक दफा पूछ लिया, मैं कहा गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? आज ਦਾ नहीं ना, बहुत पुराना मेरा शागिर्द है. अच्छा जी. He would remember the phone numbers, 10-digit phone numbers. If in today's scenario you don't remember more than one or two, your wife and okay, that's about all. Rest all nahi hai usme. But he remembered every number. He never ever dealt with this, any diaries or any such thing. Since phone pe baat ho raha hai, I will share one satsang on phone. एक दिन हम छोटे मंदिर से इजाजत लेके घर आए. तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा. बिकॉज उस दिन जल्दी इजाजत मिल गई, घर पहुंच गए. Obviously, what do you do when you come home? You go off to sleep. And it's time for you to sleep. Why? Because next day, both of us are working. So we have to go for our work. तो मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, बच्चे छोटे थे, तो पूरे घर में एक मोबाइल फोन होता था. That was mine. So as I would go off to sleep, my daughter, हालांकि I remember it was 16 rupees a call or so, something like that. But anyway, she would take the call. किसे वो कौन जाए लैंडलाइन पे, कोई query होगा because they are all studying. So I'll give a call to my friend and then ask. And so phone invariably, as we'll go off to sleep, it would go to our kids' room. Around 11:30 or so, it rings. Sangaji, it rings and says, "हाँ, बाल किथे है तुम?" My daughter recognized that was nobody else but Guruji calling. She came running to my room. She said, "Papa, Guruji." I jumped from my bed. I said, "मैं कहाँ जी गुरुजी? की कर रहे हैं तुम?" I didn't know what to say. I said, "सौर्या जी." मैं कहा, "हाँ जी गुरुजी." चलिए आए, सौन दा टाइम नहीं है, पाठ करया कर. 11:30 in the night, I get a call. And I'm fully charged, totally energized. मैं कहा, "ठीक है गुरुजी." अच्छा कल आए. And next day was non-Sangat day. So he called me next day. So that was a different thing. But invariably, in between, he used to surprise by making calls. And in front of me, he called many times. He never consulted any directory or diary or anything. He said, "Anu phone milai, Anu milai, ekdam phone. Kiya Guruji number, tak tak tak. He will give, you dial and give it to him." So like this,
yeah, that was some pleasant surprise which you used to get, which we miss a lot. But Guruji, हर एक संगत जो जुड़ी है उनके साथ है. These things one should not take too much in the head, क्योंकि गुरुजी अगर आप सही मायने में very honestly and sincerely आप प्रे करोगे, वो आपकी बात सुनेंगे. सुनेंगे to an extent कि मानेंगे भी. एक और सत्संग आपको सुनाता हूँ. Do I have time? Yes, uncle. Yeah. Do I? Yeah. May I? You can continue, uncle. Yeah. Okay. We would love to All right. listen more and more. Thank you. Shukrana. Jai Guru. Yeah. Jai Guru. My father was very unwell towards the last 8 months or so. He was bedridden. But he was not keeping too well. And he was very, very adamant, mainu hospital nahi jana. So, as a result, ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸਭ arrangement ਕਰ ਲਿਆ. In terms of oxygen, in terms of other Medicare, attendant 24/7. So that was there. But things were not very conducive. So, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ Guruji used to give darshan all 7 days. All 7 days. So every day, as I would come back from office, everything would be set and we start straight for Chote Mandir and we would go. Aram na matha tek ke piche baith jao, not utter a single word. मन में जो, क्योंकि बोलना तो है ही नहीं वहां, मन में जो प्रेयर है, गुरुजी मेहर करो, डैडी नु ठीक कर दो, whatever I had to say, pray for my father, I used to do that. But sit down, बड़ा सुकून मिलता था. चलो यार, गुरुजी ने कहता अपने आप होएगा. Come back. Again next day, this ritual kept going. One day, when his condition was not very good, we left little early. Around 6 we reached there. 7 o'clock आते थे सैर कर, 6:30 आते थे गुरुजी सैर करके. तो those of you who are familiar with छोटे मंदिर, किचन के बाहर एक वुडन प्लैंक था, वहां पे वो बैठते थे और फिर अपने रूम में जाते थे. तो हमने कहा let's go little early. If we are lucky and Guruji permits, we will sit there and maybe, because see, होता क्या है, जब आप घर से जाओ प्रिपेयर होके कि आज ना मैं गुरुजी को ये पूछांगा, the moment ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, total blank, you will forget completely what you're here for. मत्था टेक के ਤੁਸੀਂ पीछे चले गए, चाय प्रसाद लिया, लंगर की आ गए. गाड़ी में बैठोगे, ओ I had to ask this, क्या हुआ? पर वो प्रेयर तो कर लिया आपने, मैसेज गुरुजी के पास पहुंच जाता, पर तुम्हारे को उतना करेज नहीं होता था. सो हमने कहा हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे. हम पहुंचे, गुरुजी पहले ही वहीं बैठे हुए थे किचन के पास. और जो ही हमने हल्का सा दरवाजा खोला, मेरे को देखा, हाँ आ गया, मैं तेरी इंतजार ही कर रहा सी. ओ माय गॉड, मैंने कहा हमने तो कोई फोन भी नहीं करा, हमने कुछ सी से बात नहीं करा. It is just that as I came back from office, I saw his condition. I told my wife, I said, let's go early today. आजा. मैं मत्था टेक किया, बैठ गए. After a while, he calls me like this. इधर आ. मैं कहा जी गुरुजी. Now please listen to this.
short conversation with Guruji, which will give answers and make clear a lot of questions which any one of the Sangat who is listening to this has at this point of time. He says, "O चलिया, तू रोज आ रहे हैं अपने डैडी नू बख्शा के जा रहे हैं, तू आने प्रे कर दे, मैनू अपनी संगत दी सुननी पैंदी है, मैं बख्श देना, उन्हों जान दे, वो बहुत तकलीफ विच है, तेनू पता नहीं." I didn't know what hit me. I didn't know what to say. Tears rolling down, hands folded like this. Mecca, how can you say about your near and dear one to go? We are not that courageous. We are not. So I just folded my hands with tears rolling down, and I said, Guruji, जिस तरह तुसी ठीक समझो. Sangaji, after that, of course, we were there, पूरा लंगर प्रसाद करके मत्था टेकिया. Then Guruji ना जान वेले जब इजाजत देंदे सी, कदी-कदी ऐसा करते सी, जाओ, जाओ. That day he did like this. Every movement you have to watch. Movement is how there is a message there. So we moved out, walking towards the car. I was telling my wife, I said, Guruji ने आज इस तरह क्यों किया? क्योंकि मन में तो डर है. Dad is not feeling well. घर पहुंचे हम. And he moved on. उनको गुरुजी ने bless कर दिया. He was genuinely not feeling too well. He had even got bed sores and whatnot. और उनको बख्श दिया गुरुजी ने. So प्यारी संगत जी, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है. आप मन में मन जो कहना है आप कहिए, मगर गुरुजी को मालूम है क्या चीज कब करना है, जिससे उनके भक्त, उनकी संगत, प्यारी संगत जिनसे वो बहुत बहुत प्यार करते हैं, सबसे नो पार्शियलिटी इन गुरुजी दरबार. उनको मालूम है आप मांगने कुछ जाओगे और आपको मिल जाएगा कुछ और. Which is more important at that point of time for you, which you could not even imagine. So that's what our Guruji is. And I can't say anything beyond that after this satsang. Now, why I requested you to open your windows, just in case any one of you, किसी को भी कोई प्रश्न हो, please do ask. उससे क्या होगा, मन का वो निकल जाएगा. To the best of my ability, Guruji will make me answer only those which he wants. Rest I will say, Guruji के स्वरूप के आगे प्रार्थना करो, जवाब वहीं से ही मिलेगा. So maybe whosoever wants can raise the hand, and then it will be well coordinated. Right, Auntie? Yes, Uncle. Yes, there is one auntie, Sudeshna auntie. Puja auntie, इनको unmute करें please. Sudeshna auntie को. जय गुरु जी. Yeah, she has been unmuted. Yeah, please, auntie. जय गुरु जी जय अंकल. गुरु. Yeah. विद गुरु जी आज्ञा, एक्चुअली मेरे मन में, मैं बहुत न्यू हूँ तो कोई भी भूल चूक हो तो मुझे पहले माफ कर देना. तो मेरे मन में एक सवाल है कि देखिए, जैसे YouTube में बहुत सारे सत्संग सुनी हो, लाइक जितने भी गुरुजी सुनवाए हैं, मेरे मन में ये सवाल आता है कि जो मंत्र जाप है
वो उसका देखिए, मैंने ये तो सुना है कि जो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का जो नेक्स्ट लाइन है, गुरुजी सदा सहाय, वो मतलब सम ग्रुप ऑफ आंटीज एंड अंकल्स वेर चैंटिंग, और उसको गुरुजी ने कहा है कि इट्स ओके, इट कैन बी डन। बट माय क्वेश्चन इज, जो जैसे हम लोग नॉर्मली सुनते हैं ना कि ओम नमः शिवाय इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट शिवजी सदा सहाय फिर कहाँ से आया? अब इसको इसके आई हैव आस्क्ड अ फ्यू अदर पीपल, तो मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिले। देयर इज नो वन आंसर दैट आई गॉट, सो थिंग्स आर नॉट क्लियर टू मी कि ये एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। क्या ये गुरुजी बोले थे, या किस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे, किसको बोले थे? मुझे इसका थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। ऐसी चीजों में आंटी सुदेशना आंटी, आप जितनी गहराई में जाओगे ना, यू विल लुक फॉर लॉजिक, और गुरुजी के दरबार में कोई लॉजिक होता नहीं है, राइट? गुरुजी के दरबार में कोई लॉजिक नहीं होता। हाँ, इतना मैं आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर, उस वक्त गुरुजी खुद अपने स्वरूप को ना साइन करके, ये तो लोग आजकल सुपर इम्पोज कर देते हैं, यू नो, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, पर उस वक्त खुद मार्कर से वो साइन करते थे। तो वो जो स्वरूप वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसके ऊपर लिखा होता था ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। So it means, what does it mean? It has approval from Guruji Maharaj. So if it has approval, why any question, why any discussion on this subject? Right? जी, clear. Any other Sankat wants to ask anything? I think Renu aunty is speaking. हाँ जी जरूर, अरे या अंकल मैं बाद में बात करती हूँ इनको। रेनू आंटी, who is there? रेनू आंटी, have you been yeah, please रेनू आंटी इनको अनम्यूट, पूजा आंटी इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल मैं प्रश्न तो नहीं करूंगी आपसे, बस लेकिन आपको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जिस टाइम आप अभी गुरु जी को बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गुरु जी सामने ही है, और जो आप बता रहे थे मैं बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि गुरु जी की हर चीज इतना अच्छा लगता है सुनने में। गुरु जी सबको ठीक करते हैं सब कुछ, लेकिन वो क्या करते थे, कैसे बोलते थे, कैसे आपको जाने के लिए बोला, ये सब सुन के इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम ठीक है, हम उनसे चोले में नहीं मिले, लेकिन जब आप लोगों से ये सब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने हम भी मिल रहे हैं उनसे। आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एक चीज रेणु आंटी मैं बोलूं, गुरुजी है, यही है, कहीं नहीं है, यही। एंड इफ एट ऑल, ये प्यारी संगत जिनको रूबरू मैं अब देख सकता हूं, एंड दे हैव बीन काइंड इनफ in listening to my humble request to open the windows so that we can interact, it's because of him and no one else. It's really great. It's really great. बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे आपसे सामने देख के। बंद करके तो हम करते हैं, लेकिन आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। मत करा करो बंद, मत करा करो. You know, otherwise you go off to sleep. I don't know. I feel suffocated when anyone asks me, invites me, because I get invitations from multiple platforms. I just make one request. I say, look, I will stop after sharing one because you're inviting me. Because I don't say no, by the way. I always get a feeling ये सेवा है. क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग सुनाना और सत्संग सुनना दोनों ब्लेस हो जाते हैं बिकॉज ये सेवा है. So I don't say no until unless some compelling thing like I'm traveling or I'm not available for whatever, then only yes. Renu aunty, thank you very much. Thank you. Shukran. Yeah, Geena Singh aunty. पूजा आंटी इनको अनम्यूट कर दीजिए, गीना आंटी को.
Yeah. Jai Thank Guruji you. Maharaj, Jai Guruji Yeah. Sangat ji. Achal uncle, it was a real bliss to listen to you, and your satsang, which was the latest one, was so convincing in your conviction with Guruji. My only request is, can you please share how you connected with Guruji? Because for us new people, that is very important. It gives us a lot of confidence that we are, following the right path and we are going in the right direction. If you could just give us in a brief as to how you connected with Guruji. Auntie, my connection with Guruji goes back 23 years now, right? And the very fact you are in this platform connected, it's not because of anyone else. It's because of Guruji himself. He made it amply clear. मेरे दरबार विच मेरी इजाजत दे बिना कोई नहीं आ सकता. See, his rule books were very, very crystal clear. So you should not ask or worry about how you or me, anybody else got connected. जब जिसका समय आएगा उसको खुद ब खुद गुरुजी अपने लैप में ले लेंगे. Got it? आपका समय आ गया, आपको गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया. एक दफा गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया, बल्ले बल्ले. Right? Right. So हम तो अभी भी सोचते हैं अरे 23, हमें तो और कुछ साल पहले ही हो जाना, जुड़ जाना चाहिए था. Because that greed in human that doesn't ever stop. I hope I'm able to answer your question. I understand completely. So, Auntie, Geeta Auntie, this is what I feel is imperative. In fact, your platform should consider people, Sangat coming, going, sharing one satsang and moving out. No. क्योंकि वहां पे जब गुरुजी के दरबार में हम बैठते थे तो गुरुजी की इजाजत के साथ ऐसे स्मॉल सत्संग शेयर होते थे. तो वो तभी हो सकते हैं अगर आप सामने सिर्फ निमोनिक देख रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग का. ओके, one round up, one down, and some name floating around. No. What will you do? By this time, I would have gone up to sleep. Yes. Right, uncle. Eye contact hai. So we are also feeling very much different from others. Yes. Very fact. Auntie earlier said, Auntie said, कि हमें लगता गुरुजी हैं. तो वो हैं. और वो closed windows में नहीं है. I'm sorry. Then you are in your confined room. Yes. Or you are in your car, or you are in wherever you are. But we can see you can see us. And literally, I was in tears when you started the satsang. I don't know why. I really had some tears in my eyes. So it's not due to Guruji's connection. Yeah. देखिए एक चीज और गीता आंटी, remember one thing. गुरुजी के दरबार में जब आप eyes close करके बैठते हैं ना, when we used to sit there, I used to, because मेरे को ना थोड़ी देर के बाद शुरू में घबराहट होती थी, तो मैं आंख खोल देता था. अरे मेरा गुरु सामने बैठा, how can I close my eyes? घर जाके मैं आंख बंद करूंगा, गुरुजी के सामने क्यों बंद करूं? So that was invariably my discussion with my wife. She would just go, Kathy, you don't know, you are in a different world when you close. I said, no, my guru is in front of me. I will not. So again, difference of opinion. She was happy closing eyes and I was happy opening. Why? Because I could see him. दर्शन कर रहे हैं आप अच्छे से. हम और गुरुजी का हमेशा एक चीज था, अगर उन्होंने आईज में आपको देख लिया, it is not one glance, it is not x-ray, it is not ultrasound of a particular place. I'm using this, what you call terminology to give an example. It is an MRI. If Guruji has
looked at you from top to bottom, full body MRI has done. He knows precisely. He knows precisely what's wrong where. You don't have to utter a word. So why deprive yourself from MRI? Which your own guru is doing for you, for betterment of you. Yes. And since you talked about tears, so sitting there, if you turn your side, left, right, invariably, in front of Mahashiv, when you are sitting, tears will roll out. फिर उसके अंदर फिर यही realize हुआ कि all that thing is negativity filled in our body. Let it ooze out in whatever manner it is coming out. Right. Don't stop it. Don't stop. अभी भी कई दफा जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं तो खुद पहले तो हमें गुरुजी खुद ही कहते थे भाई आजकल तो सेवादार हो गए हैं, बैज होना चाहिए, ये होना। पहले क्या होता था, आपने मत्था टेका, हाँ मेरे को ऐसे साथ में खड़ा कर लिया, साथ में मेरी वाइफ, शी वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन, मास्टरानी होते लाइन लगवा, चल पीछे आ, तो वो लाइन लग रही है। सो यू विल सी इन सम ओल्ड वीडियोस, आई एम इन वन प्लेस इन फ्रंट, शी इज बैक बिहाइंड, बड़े प्यार से शी वुड डू इन खंडो, यू नो, से नई लाइन में, और कोई हुल्लड़िज्म, नथिंग, गुरु इज इन फ्रंट ऑफ यू। किसी ने लाइन नहीं ब्रेक करना, किसी ने जंप नहीं करना, किसी ने धक्का नहीं मारना किसी को, सिंपली यू हैव टू फोल्ड हैंड, जय गुरु जी। सो वो खुद ब खुद वो करवाते हैं सब कुछ। यस, एनी अदर, आई कैन टेक वन और टू मोर एंड देन जय गुरु जी to everyone, but I still want, you know, you would relish, you would, I would say, get a more meaningful satsang rather than coming and going. Any You other wanted to ask? auntie, uncle wants to ask uncle something? अभी बहुत खजाना है, बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। प्लीज आइए कोई आगे। अंकल बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आप, हम बिल्कुल ऐसे फील कर रहे हैं कि हम उस वहां पर लाइन में क्यों नहीं थे उस समय। we're just missing that, we just missed that. Any other? Yeah, Sudeshna auntie, again you want to say something? Pooja auntie, please unmute करें इनको, Sudeshna auntie को। Yeah, please बोलिए। अंकल, अगर हो सके तो जो सुना है ना कि गुरुजी जब सामने होते थे तो उनके बॉडी से ना बहुत सारा लाइट रेडिएट करता था, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सुनना है। देखो सुदेशना आंटी, लाइट एमिट करना तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट हाँ, fragrances, okay, आपको, if you are so lucky, आपको चरण सेवा मिली है, आप उनके चरण दबा रहे हैं, because then that was the time I used to close my eyes. तो आप जब, when you are done with, and which is चंगा वे, जा लंगर कर, because by the time langar is served, you get up, your hands are full of that fragrance. You know what I used to do? I used to do like this. Hold on to that, close to my chest. I used to drive my car like this. Come home. जब तक हम आते थे 11:30-12 बज ही जाते थे रात को. So come home. That hand put in like this on my parents, on my kids, and make sure they get blessed. Emitting of light is exaggeration, according to me. Fragrance is 100% sure, which we all have experienced. Even today we get. Even today experiencing. And we are still experiencing. Yes.
Got it? True. So देखिए, तभी मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरु महाराज के साथ करें, आपको सब मिलेगा। बीच में ये जो क्या बोले हम, विचोले होते हैं ना, वो कहते हैं Yes, sir. प्लीज प्लीज, आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। गुरुजी यूज्ड टू हेट, सपोज कोई लेके आया, माथा टेक रहे अपने साथ, तो गुरुजी ने एकदम पूछना ये कौन है? गुरुजी इन्होंने ब्लेस कर दो, तू मेरा इतना केस खराब कर रहे हैं, तू वापस जा, आउट, नो सिफारिश थे, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन करन दो। That is what I am saying. Please have direct connection with Guru Maharaj. That's what he always wanted and prescribed for all the Sangat. Any Vichola, I don't want to use any other term, just ignore. No matter वो पुरानी संगत का जो मर्जी हो, right? From social media, I even learn some of them are prescribing a lot of things. Stay out of that. गुरुजी के आश्रम की तरफ से ये आदेश है, have direct connection only. He will bless. Don't get impatient. He knows when to bless. He knows what to bless. एक बार कहते पास ही बैठे हुए थे, कहते बड़े खिंच जैसे जाते ना ऐसे, वो की यार ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣ ਆਏ हैं वो ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਦੇ ਹੀ नहीं। वो असली चीज क्या था अंकल? Is it गुरु, मोक्ष or what? गुरु, Like गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम ले लिया तो ब्लेस हो गए, आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। मैं थोड़ा सा ऐड कर सकती हूँ इसमें? Sure, मैं आए sure. 1 मिनट के लिए। आज एक्चुअली लाइक दैट इज व्हाई आई एम लिटिल डेक्ड अप आल्सो। मैं थोड़ा शॉपिंग से, यहाँ दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है ना, एक लाइक आई बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, तो इसीलिए थोड़ा 1 महीना पहले कोलकाता गोज मैड फॉर शॉपिंग, तो थोड़ा गई थी एक फ्रेंड के साथ, बहुत पुरानी फ्रेंड है, तो वो ना थोड़ा मिसबिहेव कर रही थी, और मैं जाने से पहले गुरुजी को बोल रही थी मुझे ना उसके साथ जाना नहीं है, बट देन जैसे बोलते हैं ना गुरुजी पे छोड़ दो, यू शुड नॉट आस्क फॉर इट, तो मैंने ऐसे ही मन में, मतलब मैं गुरुजी के बोल रही थी कि आप देख लो, अब जो भी, वो उसको फीवर भी था, तो आजकल तो फीवर किसी को होता है तो डर भी लगता है ना जाने में साथ में, और बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कुछ, तो और वो आज स्पेशली छुट्टी ली है शॉपिंग के लिए, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी देख लो आप जो भी आपको ठीक लगे, तो वो कुछ दिनों पहले से भी थोड़ा थोड़ा ना बहुत रूड से बात कर रही है, तो मतलब जब भी उसका मूड जैसे होता है, मूड स्विंग्स के हिसाब से, तो चलो ठीक है जो भी है, मैं थोड़ा टिमिड टाइप की हूँ, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, चलो मान लिया कुछ, यू नो आई डोंट जनरली रिप्लाई बैक और शो एनीथिंग रूडनेस टू एनीबॉडी जनरली, तो आज क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा रूड हो, व्हेन वी वेंट टू द शॉपिंग मॉल, मतलब बहुत बहुत ज्यादा रूडली बात की, लाइक इट रियली टिप्ड ऑफ माय माइंड, तो मैंने सोचा कि वहां पे जवाब दूं, फिर सोचा कि नहीं रहने दो, फिर भी होता है ना मन में कुरकुर 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 चलता रहता है, तो आई स्टार्टेड डूइंग मंत्र जाप मन में, और वैसे एस्केलेटर से जैसे हम लोग नीचे आए, फिर नीचे आके मतलब अंडरग्राउंड एरिया में कुछ और काम था, जाना था, व्हेन वी आर जस्ट अबाउट टू लाइक लैंड इन द स्टेप ऑफ द एस्केलेटर व्हिच वाज गोइंग डाउन, वहां पे ना मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आया गुरुजी का, 1-2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई मतलब यह बड़ा मॉल है, rich people can be there, और वहां पे you know those kind of fragrances usually are from good quality of perfumes, तो मैं 2-3 सेकंड वहां पे रुकी देखने के लिए कि कोई लोग पास हो जाए फिर भी आ रहा है कि नहीं, वो बहुत देर तक आ था, और ना मैं जानबूझ के रुकी, और मैंने ना मन में ऐसा इमेजिन किया कि गुरुजी ना सामने खड़े हैं,
मतलब फ्रेंड के सामने वैसे कर तो नहीं सकती, वो लोग पागल समझेंगे, और मन में मैंने उनको प्रणाम किया। और गुरुजी ने मुझे पता नहीं वहां से नीचे जाके ना, वहां पे एक फ्लूरिस का जैसे होता है कॉफी शॉप, तो वहां पे भी जाके वो बहुत खिच 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 कर रही थी। आज मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि क्या है, मैं आई नेवर रिप्लाई बैक टू I यू। got it. तो मैंने I have उसको got. थोड़ा सा मैंने जवाब दिया। गुरुजी ने मुझे इतना हिम्मत भी दिया कि थोड़ा थोड़ा कभी भी बोलना भी चाहिए। तो इस मतलब सभी चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। देखिए, जब आपको फ्रेग्रेंस आ गया, यू आर ब्लेस्ड राइट देयर एंड देन। एंड आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके वो सब कहेंगे आप पागल हैं। डोंट बॉदर, कीप इट टू योरसेल्फ, बेस्ट इज नॉट टू शेयर। एक और चीज वो कहते थे, हर एक से बात नहीं करो। डोंट शेयर सच ब्लेसिंग्स with others, because others will feel envy, they will give negativity to you and snatch your blessings, not take away, snatch your blessings. So such things, once you are blessed, no looking back. All right, थैंक यू। इजाजत, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके दोबारा। जैसे गुरुजी कहते थे, आंदे रहा करो, सो बुलांदे रहा। Jai Guruji, uncle. Yeah. Jai Guruji. Just a moment, uncle. I'll put on my headphones. Otherwise, Yes. I won't be able to hear you. Uncle, I think you so I think much. you had a question. Why are you deprived of Yes. that? You should go ahead. I actually I wanted to see if any of Guruji's Swarup signed by him you have. Any of can we have darshan of that now or next time? You must be having something like No, signed by him. I do have. Yeah. I do have. So anything I he has do given have. you specially. So if it's nearby, then it's okay. Otherwise, we'll wait. We have patience. Next, I have Yeah, to be sure. prepared for that, because see, Yes, those things please. have been kept somewhere. Swarup ठीक is है। there. I won't Yeah. say अगर गुरुजी महाराज ने खुद दिए हैं, Swarup is हाँ there. जी, यह कि और उनके ओरिजिनल साइन और उनकी ओरिजिनल चीजें, क्या मतलब ब्लेसिंग्स आपको जो मिली हुई है, उनके हम थोड़े से दर्शन करना चाहते हैं। आप नेक्स्ट टाइम रख लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें देखने में, एक अच्छी फील आएगी अंकल। ठीक है अंकल? I will try to keep those stuff ready, or maybe Yes. keep the iPad in such a location that those are in the background. Okay, Oh, thank you so much. you get darshan of that. Why just glimpse? You should Yes. take more from the Swarup, from the Charan which he has given, all that, whatever. Oh, thank you so much, uncle. Chalo, we will wait for your next session, uncle. It was very lovely listening you and Guruji's blessing and your experiences. We really loved it. We don't want to end it actually, but time constraint is there. Everybody has to sleep now. Yes. Thank you, uncle. Yes. Jai Guruji. Thank you. Jai Guruji. Yeah. Jai Guruji. Shukrana. Jai Shukrana. Yeah. Puja auntie, can we take Agya now? सर्वथा पला Thank you, आज्ञा Aunty. गुरुजी। Shukrana, Guruji. Thank you. Shukrana, Guruji. Thank you, Guruji. Jai Guruji. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Shukrana, Guruji. Beautiful satsang.